Good morning, everyone. A very good morning. I hope I am clearly audible and visible to all of you. So today we'll be starting with an important aspect in geography, that is economic geography. A very good morning, Subham beta. Dheeraj beta, good morning. Suman beta, a very good morning. Khus rahiye. Vikrant beta, a very good morning. So the approach how we'll be dealing with the human geography we had already seen, and we had also discussed how paper 1 is very much connected with paper 2. Okay, so there are certain similar topics that we need to cover. So in order to do that, we'll combine both the topics and you'll be better able to understand how to use it. Plus one more thing that I want everyone to know is that after reading this segment, paper 3 will become a cakewalk for you. GS में paper 3 आपके लिए बिल्कुल आसान होगा. Some of the topics of paper 2 will also become easier. सूरज बेटा खुश रहिए. सुमन बेटा I'm all good, सब बढ़िया है. Okay, आप लोग भी हेल्थ पे ध्यान दीजिए. बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं and it is not a good idea. ठीक है, जीवन में कुछ बनने के लिए हमें दिमाग से फ्री होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए. Okay, you need to enjoy the things that you are covering. Vikas beta, a very good morning. So if you want to achieve something in life, you have to work hard, but you should not take so much pressure that it becomes difficult to digest the things. Okay, the life has to be better with the endeavors that we do. Okay, you are doing this thing to make your life better, to make your family proud, not to become sick people. Okay, so do not be into the rat race. Okay, try to achieve the excellence. Okay, it is every human's tendency to become better, but in that race you don't have to lose yourself. Okay, क्योंकि सब कुछ किसके लिए है? For whom it is there? Okay, for the people who are actually going to achieve. Okay, and in the morning only I saw that message and I was like, at this age you don't have to be like that, right? You have to be full of life. Okay, the word depression shouldn't be even there associated with you. Okay, because who is positive, he only can utilize his brain's full potential. And one of the exams, IAS, one of the toughest exam in the country, okay, definitely needs your full mental potential. And when you associate yourself with kind of words like depression, it becomes more difficult, right? Ha, Suraj beta, you'll get the things. This is, I always try this thing only. I make sure that you understand the things, okay? When you internalize the thing, you'll remember the things. Understanding is important, and this is what we are emphasizing. Mukesh beta, खुश रहिए. I'm all good. सब अच्छा है. I hope everybody is doing fine. And you must try to be healthy, not only physically but mentally as well, if you want to qualify the exam in the very first attempt. Okay, and that everybody can achieve. So now let us come back to the very thing that I was discussing. That paper 1 and paper 2, okay, many of the chapters are quite similar. Okay, in one of the aspects in paper 1, we look at the world view. Okay, and in paper 2, we look at what is being done in India. Okay, and this is a segment, economic geography, which influences 5 chapters of paper 2. All the topics that you see economic geography in paper 1, you have other chapters which deal with the same topic in paper 2. And we'll start with agriculture, but it is not limited to agriculture only. Okay, resources, agriculture, industry, okay, trade. So all the economic activities, the chapters which deal with economic activities, even transport, this is part of the economic geography paper 2 combined. And we'll be approaching this in this manner only. हाँ शुभम बेटा, that is correct. You have to believe in this thing. UPSC is just part of life. जैसे हम नौकरी क्या है, प्राइवेट सेक्टर में लोग क्या कर रहे हैं, you switch jobs.
Now lateral entry is allowing many people to become this thing, na, what you are striving for. आप सालों लगा के जो दे रहे हैं बाहर इंडस्ट्री में 10 साल काम करके लोग लेटरल एंट्री से आ जा रहे हैं. Okay, so if you'll choose excellence in life, you'll definitely get many things from life. Okay, IAS is the easiest way. Okay, shortest time spent to get success. इसमें कोई doubt नहीं. Okay, so this is what you are trying to achieve. But success comes from different ways. Okay, most of the people who are teachers, okay, the various coaching institutes that you see, okay, they earn in crores and crores. Okay, they failed in UPSC. So success तो यही आपको दिखता है जिसके पास आप पढ़ने जाते हैं. They make more money than an IAS officer. Salary wise देखेंगे तो बहुत ज़्यादा. Okay, even if you look at not the institution, even if you look at individual teachers, okay, the people who did not qualify doesn't mean कि उनका life नहीं है कुछ. Okay, तो इतना harsh नहीं हो जाएंगे खुद पे. Okay, माँ बाप के बारे में भी सोचेंगे. You need to think about your parents. Okay, क्योंकि आप दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं. Ultimately success का लेके करेंगे क्या जब surrounding ही दुखी है. Okay, so everybody is clear. That discussion we will not do again, right? And for all those people who are like new and haven't seen this thing, there is one video in the playlist, the same playlist. Okay, geography optional, human geography made easy. I have explained it, how these are similar. Okay, we have seen most of the chapters. Human geography made easy. Okay, you need to see this video and you'll get how much similar this is. And now you'll discover कि जो बहुत बड़ा syllabus लग रहा था, though we took more time, okay, but the syllabus is small because now we'll be covering 5-6 chapters within no time. Okay, we took more time on the chapters. Physical geography we took a lot of time because most of the people are not conceptually clear in those subjects, and this is something that you experience every day. Economic geography. Okay, so first we'll try to understand economic geography, then we'll look how agriculture is part of it, and then we'll move forward. Okay, so what do you understand when I write this economic geography? Okay, what is this? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Geography you are very much aware of. So economic, what is this combination of the term economic and geography? What do you get out of it? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? Okay, this is something that every now and then you use. I'll explain it. I'll also tell you what thinker said and everything. Okay, we'll be dealing with this. But economic word जैसे ही आता है, it is associated with what? When you look at economic, the most basic thing is what? क्या आ रहा है दिमाग में? What comes to your mind when you see this term? When we say economic, what it is? It is related to certain activities of the man. Okay, ठीक है, Subham, you are in like production process. Again, the production process is related to what? Some activity of man which he is doing for his livelihood, to sustain himself, to make his quality of life better. So every activity, okay, that the human is doing in a geography in order to attain better life, okay, whatever he is doing with the environment, with the surrounding, is economic geography. In simple terms, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं. Now, one more thing that you have to understand. Have we not looked at various aspects related to this when we were covering rest of the chapters? आप regional planning क्यों पढ़ रहे थे? Okay, आपने applied geomorphology क्यों पढ़ा? Why you were studying applied climatology? Why you understood biogeography? Okay,
And why you are even looking at the environmental aspects? वो क्यों देख रहे थे आप? What was the purpose? So when we looked at Rostov's stages of growth, didn't we talk about the economic growth, the activities that people are doing? Okay. So actually we were touching various perspectives in different chapters. वो यहाँ use करेंगे हम answers लिखने में. When we'll be writing the answer, we'll be using those concepts. Okay. And I'll show you how we have already covered a lot of discussion, which was actually related to this thing. Population. मालदस बात कर रहे थे. Okay. Population will crash. With respect to what? When there will not be food. And agriculture is part of what? Economic activity. Okay. So already we have touched many areas that you'll be studying under these topics. जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, we have already touched those aspects. Okay. And we'll see how. Okay. And different people have tried to define economic geography in different ways. Okay. But we'll be mostly focusing on what some of the geographers said, so that you can use that thing in your answers. Okay. So maybe you can write. ठीक है, थोड़ा लिख लीजिए. Economic geography is the study of influence exerted by. Economic geography is the study of influence exerted by. The study of influence exerted by the physical environment the structures on the land, the climatic conditions which prevail over it, and the economic activities of man, which also reflects the place relations, in which different regions stand to one another. Okay. So the economic activity of men is the core of study here. Okay. And how it is influenced by the environment, how it is influenced by the structures on the surface, that is the physical structures, how it is influenced by the climate. Okay. So what these are part of earth geo. Okay. So when we study these correlations, we call it as economic geography. Okay. And like I said, the many people, okay, who talked about it, so we'll be looking at those perspectives as well. ठीक है, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं क्या क्या लोगों ने कहा है. So different viewpoints, the definitions that you can use. Okay. And then we'll look at the different segments of economic geography, and then I'll show you what you have already read, and then we'll look at the new things that we need to add in order to write a better answer, in order to understand the concepts. Okay. So the different peoples, change the parent, right? Different people tried to define geography in different ways. Different people tried to define geography in different ways. Different people tried to define geography in different ways.
some of the definitions are given below. Okay. Now, जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, again we'll be using those names only. Dudley stamp. We'll just look at the perspectives, and so that if there is a direct question which asks you to talk about economic geography, you can use some of these statements. Okay. He defined economic geography. Which involves as a discipline which involves consideration of the geographical and other factors, which influence man's productivity, but only in limited depths. So far as they are connected with production and trade. So far as they are connected with production and trade. So far as they are connected with production and trade. Okay. Now Zimmerman, one of the most important contributors. Okay, Zimmerman के बारे में resources when we'll start, will deal at length. Okay, but we'll take his definition here only. Professor Zimmerman. Okay, in perspectives also I had given a reference of him, if you remember. Here we'll look at his principles in detail, and he'll become the most important man when he'll write answers. ठीक है, already मैं बता चुका हूँ, Hagerstand's idea again will be using in writing economic geography answers. Vicky beta, very good morning. हाँ, कोई बात नहीं, you have just leave half a page and you can start writing, or maybe leave one page. Okay, leave one page and start writing. So Zimmerman's view, he gave a very simple definition. Okay, he said that economic geography deals with the relationship of the environment with the economic life of man. जो भी चीजें आदमी करता है, ठीक है, whatever activities he is doing related to economy, okay, is in relation to the environment, is economic geography. Okay, so everything, all the activities will come under consideration, and he have explained it beautifully. We'll see later. Okay, इनका बहुत, you'll get a direct question on Zimmerman. Okay, so we'll study him in little more detail. Professor E.W. Zimmerman explained economic geography or defined economic geography. Professor E.W. Zimmerman defined economic geography as a discipline which deals with the economic life of man, with relation to the environment, deals with the economic life of man with relationship to the environment, deals with the economic life of man in relationship to the environment. Okay, so very simple definition. Now if we talk about Murphy, R.E. Murphy, okay, I'm giving you some definitions. Why? So that you can use somewhere. ठीक है, जिसको याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है. Okay, like I always tell you, if you can remember, it is good.
if you cannot, you need not be much concerned about it. But naam yaad rakh lenge, Dudley, Stump, Zimmerman, Murphy. Okay, all of them tried to define economic geography in different ways and write a definition based on your own understanding. ठीक है, अपनी समझ से लिख देंगे, इनका नाम लिख देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा स्टेटमेंट याद हो. Okay, then Murphy, R.E. Murphy. R.E. Murphy, the definitions, like I always keep telling you, you have to write your own definition. Remember the name of the people who have contributed. Okay, it is more than sufficient. So he said कि the economic geography is a subject discipline which compares two areas from the perspective of how people make a living. लोग क्या एक्टिविटी करके अपना जीवन चला रहे हैं, इसका कंपैरिजन जब हम करते हैं दो रीजन्स में, इट इज द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ economic geography. Okay, so write down. Murphy defined economic geography. Murphy defined economic geography as a discipline, as a discipline, as a discipline which has to deal with the similarities, which has to deal with the similarities and differences, which has to deal with the similarities and differences from place to place, similarities and differences from place to place in the ways people make a living, in the ways people make a living. Okay, so different ways in which people make a living. This is the core concern. Okay, this is the core concern of economic geography. This is something that was defined by Murphy. अब इनके definitions को अगर आप देखते हैं, if you look at the definitions which were given by Stump, Zimmerman and Murphy, don't you see that they are quite similar? Okay, they are mostly focusing on what? They are mostly focusing on the economic activities of men. Okay, they are concerned with the this thing. Now one more person, N.G. Pounds. Okay, I'm giving you so many of them, but doesn't mean that you need to remember all of them. Okay, just remember the name. कुछ तो याद रखिए. Okay, giving you these many definitions doesn't mean that you need to remember all the definitions. Understand the concept, make your own definition and write few names. कि these are the people who tried to define economic geography, but in crux we can say that. ऐसा लिख के आंसर में लिख देंगे. ठीक है, पूरी कहानी, everything you don't need. Now he said that all the productive things that humans do, जो भी हम करते हैं, okay, productive in a sense what? Which aids to the quality of life, okay, which aids to the environment, which makes something new, all comes under the subject matter of study of economic geography. All the productive activities of man is the subject of study of economic geography. Okay, he said that economic geography is concerned with, he said that economic geography is concerned with distribution of man's productive activity, distribution of man's productive activity, concerned with the distribution of man's productivity on the surface of earth, on the surface of earth. Okay, so simply define this thing. So about economic activities when we talk about, okay, so if we try to look at the themes which can be studied under this, okay, under economic geography. Okay, when you call economic activity and you look at the surrounding, लोग क्या कर रहे हैं? Okay, what are the things which you can associate with economic geography? If we try to find the themes in economic geography, you'll get the chapters in paper 2. Okay, इसके लिए आपको अलग से नहीं कोशिश करनी है.
if you just look at the surrounding, okay, if you try to understand, अंकित बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, तो जो लोग भी लेट हैं लीव 1 page 1.5 page and start from here. We have looked at certain definitions, okay, some of the perspectives, so you have not lost many things, you just need to continue with that. Okay, economic geography. अब हम देखते क्या हैं, we have geography of agriculture, the most basic thing that you see, okay, and this is the chapter which is directly mentioned in paper 2, and aspects of agriculture is mentioned in paper 1. Different aspects of agriculture, okay, is mentioned in the syllabus of economic geography, and the very clear theme, geography of agriculture, is a chapter in paper 2. Now geography of industries, again industry is a chapter, ठीक है. के बेटा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. सो एवरीबडी जो लेट हैं लीव 1 page 1.5 page एंड स्टार्ट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ट्रेड्स आप जानते हैं, सो ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड, and mostly if we look at the syllabus, okay, paper 1 में क्या है, internal, some of the internal trade that is happening in India. Paper 1 is more focused on international trade. So these are the topics which are given in paper 1, okay, indirectly in economic geography and directly mentioned in paper 2, and these are the themes. तो आपको ये समझना है कि the syllabus ऐसे ही बना दिया, ऐसा नहीं है, okay. They knew that when we are putting so many topics, there has to be similarities, then and then only people will be able to contain this, okay. Then geography of resources, we already have seen many resources while dealing with different chapters, if you remember, ठीक है. मैरीन रिसोर्सेज पढ़ लिया ओशियोनोग्राफी में, बायोजियोग्राफी में आपने बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज पढ़े, ओके. सो स्प्लिट भी है, प्लस स्पेसिफिकली इन पेपर 1 रिसोर्सेज इज मेंशन्ड that we'll look at, okay. We'll look at the contribution of Hotling, Zimmerman under this thing. पहला ही topic economic geography is given this, okay. Then the geography of transport and communication, transport and communication, okay. Now in paper 2 both the topics are combined, specifically mentioned, but in paper 1 you'll see that these topics are given. तो ये क्या है, major theme areas of economic geography. The only theme which is missing in your syllabus is the geography of finance, okay. There is one more thing which is studied under economic geography, but आपके syllabus में नहीं है, okay. This is geography of finance. Those who study geography in their college, okay, in masters, they study one more perspective, geography of finance. It is not in UPSC syllabus, ठीक है. तो will not be touching this. Geography of finance is not in UPSC syllabus, किसी भी पेपर में आपको नहीं मिलेगा. But rest of the things, geography of agriculture, ये chapters हैं आपके, okay, clearly specifically mentioned. So economic geography, agriculture, industry, trade, resources, transport and communication, okay. Look at the syllabus, you'll find these topics, okay. And this is the reason that you have similar topics in paper 1 and paper 2. This is used in paper 1, okay. Economic geography नाम क्या है, paper 1 में use कर दिया. All these, okay, paper 2 में दे दिया.
and this is the reason that similar topics are there. Everybody is clear? यहाँ तक कोई दिक्कत? Any problem? Anyone? You clearly understand what we are trying to study and why we have combined this? Okay, ये सिर्फ मेरी सुविधा नहीं है. This is the themes of the discipline. Okay, so those who understand that it is thematic, so basic principles will remain same. The way agriculture is done in India, okay, similar type of agriculture is done in worldwide. यहाँ हम types of agriculture for India पढ़ते हैं, subsistence, okay, commercial, extensive. वही क्या है, पेपर 1 में विटलेस से मॉडल्स में दे दिया. Okay, तो यहाँ क्या है, इन पेपर 2 द टॉपिक इज मेंशन्ड दैट ही सेड, एंड इन पेपर 1 ये नाम लिख दिया है. Okay, so that is the only thing that UPSC has done. They have tried to bifurcate the paper, but same concepts if you look at. Okay, fertilizer is used in everywhere around the world. तो fertilizer में क्या है, पेपर 2 में inputs लिख दिया है. Okay, when we were studying Weber's theory, I have shown you. Okay, in paper 1 they have given Weber, in paper 2 various type of industries, and again reading Weber we saw from household industry to how to the even all the forms of manufacturing industry he is effective. Okay, so we'll be looking at all those aspects. Now if I talk about जो आपने पढ़ा है, like I said, okay, that there are certain things that you already have read, okay, and we'll be focusing on that will be used in economic geography. Okay, so economic geography, about economy, it is not like कि Zimmerman नहीं बोला है, okay, या फिर Witless से नहीं बोला है. If you look at Rostov's stages of growth, okay, models and theories में पढ़ा है ये. The economic activity, हमने क्या पढ़ा है? Economic activity based definition we are looking at. So whenever you are writing anything about economic activity, he becomes relevant. इन्होंने किस बात से कहा? Traditional society. What was the feature of traditional society if you remember? Okay, हमने क्या बात की थी? Primary sector है कहा. Okay, by looking at this will come at another conclusion for economic geography की पढ़ना क्या है. Okay, you already have seen this thing. Okay, so this was primary activity. Okay, subsistence की बात की थी traditional society में. So already we know the activities. How we have defined economic geography based on the activities, and already when we were looking at Rostov, we talked about the primary activity, the workforce which is in agriculture. Okay, now take off की अगर हम बात करते हैं, okay, और प्री कंडीशन टू टेक ऑफ से ही शुरू कर लीजिए. प्री कंडीशन टू टेक ऑफ विल नॉट लीव, सब में ही दिखाता हूं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक्टिविटी बेस्ड ही है. ओके, सो व्हाट इट टॉक्स अबाउट, देयर इज अ डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड. क्यों? बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर, न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इनटू वन फील्ड. ओके, सेकेंडरी सेक्टर इमर्जेस, secondary activity in some dominant factor, technology is there. तो टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज हो रहा है? For secondary activity. Okay, and manufacturing starts, some form of manufacturing is introduced in the society, and in takeoff stage this manufacturing becomes very very dominant. Okay, जब टेक ऑफ आता है, again the economic activity is the thing. Okay, so यहाँ ट्रेड भी स्टार्ट हो जाता है. टेक ऑफ इज व्हाट? द मैन्युफैक्चरिंग इज देयर, द सेकेंडरी एक्टिविटी इज सम ऑफ द सर्विसेज गेट इंट्रोड्यूस्ड, एंड ट्रेड ऑल्सो गेट इंट्रोड्यूस्ड.
ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द सेक्टर्स हमने क्या पढ़ा है, वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, one of the manufacturing sector dominates. How will it dominate? When it is being sold widely, and it will require the concept of trade. So trade is another economic activity that comes. Trade में क्या है, तो service sector का भी tertiary is introduced. Okay, the economic activity. When we move towards drive to maturity, now here what is happening, यहाँ क्या हो रहा था, there are more opportunities, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, ठीक है, secondary is there, but more opportunities in the tertiary sector. The tertiary sector is growing. Okay, services जिसे आप कहते हैं, बहुत सारे different type of services are there. Okay, so tertiary sector grows, more opportunities in the tertiary sector. And this is the thing कि हम किसको लिखेंगे, जो आता है ना कि it is a question of economic geography, whom we need to mention. Okay, you can mention Rostov. अगर आप Rostov mention करते हैं तो आप क्या जानते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज ऑल्सो हैपनिंग बेस्ड ऑन द एक्टिविटी. अब यही चीज क्या है, डीटी में फिट करिए, ये क्या है, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी द ट्रांजिशन इज हैपनिंग. इनडायरेक्टली यू नो दिस थिंग, बट हम पॉपुलेशन पे फोकस कर रहे हैं. ओके, इट फोकसेस ऑन how the population is changing, but the changes that are happening are based on what, economic activity. Okay, so if you understand these interlinkages, you'll never be out of theorist. ठीक है, किसको लिखेंगे, ऐसा बहुत सारे बच्चे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो दैट प्रॉब्लम विल नेवर अराइज. अभी हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी के किसी थिंकर की बात नहीं की है. आई एम शोइंग यू हाउ द सेम थिंग्स दैट यू हैव रेड स्टिल कैन हेल्प यू टू राइट बेटर आंसर्स. ओके, बहुत सारे बच्चों को कैसा रहता है कि हमने पढ़ा ही नहीं तो कैसे लिखेंगे. आई शो यू कि जो पढ़ा है उसमें क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, यहां तक क्लियर है. एंड एज ऑफ मास कंजम्पशन कंप्लीटली टर्शरी, क्वार्टरनरी. ओके, सर्विस बेस्ड सोसाइटी. इज इट विजिबल? सो यू कैन राइट बाय योर ओन, राइट. एज ऑफ मास कंजम्पशन में क्या हो रहा है, so you can see that there is element of economic activity in all these theories. Okay, so you can take reference of these theory ki it also reflects. Prabhat beta, very good morning. Okay, very good morning. Now age of mass consumption, tertiary activity, services है सिर्फ. So already you have had a glimpse of the economic activity. यहाँ किसी को डाउट है? Okay, now अगर आप एक एक एक्टिविटी को फोकस करते हैं, let us try and focus on some of the activities. Okay, now Malthus. Okay, पॉपुलेशन में पढ़ा है अगेन ये थ्योरी, ठीक है, कहीं और आपने पढ़ी है. What he says, he talks about Malthusian curves based on what, that one of the economic activities will not match. Okay, primary activity को एनालाइज किया है इन्होंने, he analyzed the agriculture. Okay, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तो बात की है, पॉपुलेशन आउटपेसेस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. ओके, दिस इज द प्रोडक्शन, लेट्स से. ओके, that is represented by the carrying capacity of any area. And what he said, that population outpaces the production.
of crops and production का मतलब क्या है? This production is what? This is a economic activity ना. जब भी word production क्या है? This is a economic activity. So when the economic activity will fail, so what? It will also impact the population. So population crashes. Primary activity में तो at least Maldas also talked about the economic activity, you can see. Okay? इस पे किसी को doubt है? Now, Hagerstrand, diffusion of innovation. ये इनोवेशन किसके लिए है? इज फॉर टेक्नोलॉजी एंड यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग. इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगेन सेम प्रिंसिपल्स. ओके, एनी एक्टिविटी if you see it goes through these three phases that he talked about. Okay, diffusion of innovation initially क्या है? Slow adoption. Okay, then lot of adoption and finally people move towards new thing. They start searching for something new. अंकुश बेटा है, वेरी गुड मॉर्निंग. ओके, सो पढ़ा है ऑलरेडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू हैव रेड all these things, what actually you have done. Okay, आपने क्या किया है? You have already studied this thing, right? Innovations, जब हम percentage of adopters, कौन है ये adopters भाई लोग हैं कौन? Who are they? Who are involved in some economic activity? Okay, so these adapters are actually involved in economic activity. Okay, so innovation, majority adapters, early adopters, and the laggards. अभी तक हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कुछ स्पेसिफिक पढ़ा ही नहीं है, बट डोंट यू सी कि है. ओके, तो अभी क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट भी नहीं हुई है एंड यू आर अवेयर कि हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? रिसोर्सेज है, कैसे यूज करना है. ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. इंडस्ट्री है, इसमें इनोवेशन कैसे ले आ सकते हैं, अगेन इसका यूज कर सकते हैं. ट्रेड है, ट्रेड में सम ऑफ द गुड प्रैक्टिसेस, अगेन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सम टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय जापान, अगेन डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. यूज हो सकता है ना. स्पेसिफिकली वी हैव नॉट रेड दिस थ्योरी. इकोनॉमिक जो 5-6 चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन चैप्टर. अब शोन यू कि विच थिंग्स यू ऑलरेडी हैव रेड एंड यू कैन फिट in the chapters that you have not read in optional. Okay, बचपन से लेकिन जानते हैं इंडस्ट्री क्या है, बचपन से जानते हैं ये चीजें क्या है. Okay, now gravity model. Okay, पढ़ा था ये. अब ये जो ग्रेविटी मॉडल था सिटी, ये कर क्या रहा था? सेटलमेंट और द अर्बन एरिया के बारे में जब आप पढ़ रहे थे, okay, I'll give you more. Like I said, when I complete this syllabus, the problem will not be about which thinker to use. Okay, the problem will be of plenty, which I'll write. Okay, we have not even entered this thing. अब ये सेटलमेंट और अर्बन एरिया ग्रेविटी मॉडल क्या बता रहा है? Why people are attracted to this thing? Because there is more economic opportunity.
every model that you read, mostly we are humans ना, हमने सब्जेक्ट क्यों बनाया है? जिससे हमें फायदा हो. ओके, मोर पुल फैक्टर्स की बात हो रही है, स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है. क्या है ये? Specialized goods and services. Okay, so more range. अब रेंज वर्ड आया तो कोई सेंट्रल प्लेस थ्योरी याद आ रहा है? सीपीटी यू हैव रेड. इकोनॉमिक एक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल प्लेस थ्योरी. ये रेंज और थ्रेशोल्ड की बात करते हैं. ये क्या है? रिलेटेड टू व्हाट? रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना. थ्रेशोल्ड फॉर व्हाट? हाउ मेनी पीपल विल बाय. सो बेसिकली क्या है? अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी. So when you are writing an answer, the problem is not of less, the problem is of more. क्योंकि ये सारे एक ही आंसर में नहीं लिख सकते और सारे हर आंसर में फिट हो जाएंगे. ओके, एंड दिस इज समथिंग दैट आई कीप टेलिंग पीपल. क्योंकि इंटरलिंकेजेस जो शुरू में टफ लगता है वो बाद में बहुत ज़्यादा आसान. आई हैव नॉट येट स्टार्टेड विथ एनीथिंग इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी. अभी तक मैंने जिम्मरमैन ने क्या कहा है वो बताया भी नहीं है आपको. I have just shown you how many theories we have covered till date and how all of them fit well in the economic sphere. Economic geography जो आप पढ़ रहे हैं, trade, industry, agriculture, communication, okay, resources. You can see some of the aspects can be used. Kishore beta. So a very good morning, settle down. Okay, so looks like something जो आपको पता है और वो यूज हो रहा है. And this is what initially I told you. Okay, the problem is never going to be of less or more. Regional synthesis, क्या चीज synthesis कर रहे थे? What you are doing? Regional planning में जब पढ़ रहे थे तो synthesis किसका हो रहा था? Okay, again we have taken an example. This product is grown here, it can be grown somewhere else. Again, analysis of the economic activity. So basically if you look at the syllabus, okay, that we are covering last, यहाँ पे हम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप 6 चैप्टर्स में जो सबसे डिफिकल्ट माने जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि हमें तो नहीं आता है, कैसे यूज करेंगे थिंकर्स. ओके, आई हैव taught you the whole syllabus and today I have shown you how you will be using. ठीक है, आज के डिस्कशन के बाद ही आप एम्पावर्ड होंगे. हाँ, अफजल बेटा आता सबका है, बट प्रॉब्लम इज लाइक I have certain reservations about things, right? I do not want to wear a t-shirt and teach. You मुझे ही टीचर वाली फीलिंग नहीं आती. Though I have taken lectures in t-shirt as well, but that is something like मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है. ओके, एंड दिस इज द रीजन दैट आई हैव डिनाइड ऑफर्स फ्रॉम पीपल. ओके, बट लास्ट रिजॉर्ट और कहीं नहीं मिलेगा तो आफ्टर ऑल आई हैव टू सर्वाइव. बट टिल डेट आई हैव रेजिस्टेड दिस थिंग. ओके, क्योंकि वो एक मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है. ओके, कि यू हैव टू कैरी सम लोगो ऑन द बॉडी. दैट इवन मैं अपना नाम भी लिख के ऐसा घूमूं मुझे ऐसा फील नहीं आता है. तो that is a problem with me. Okay, but yeah, if it will be a question of livelihood, if this phase continues, abhi to main deny kar de raha hu, how long I can, I don't know, but there are certain reservations like this जो practical दूसरों को नहीं लगते हैं. Okay, लोग कहते हैं कि this is something like मतलब it is in your head, and that is in my head only, right? तो कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं और उसका सिंपल रीज़न ये है कि आप नहीं करना चाहते हैं. ओके, सो आई एम नॉट ज्वाइनिंग एनी प्लेसेस बिकॉज द थिंग इज़ लाइक
as far as the offers are concerned, most of the people like, I feel like मैं advertise कर रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, वैसा मुझे लगेगा. So I chose not to join them, and still I'm in talks with some of them, but ये एक problem point है. All of them want me to wear a logo, and for which I am not ready till date. Okay, future का like I said, even I don't know. जब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो कुछ भी करेंगे, वही हो जाता है. बट अभी मेरी सिचुएशन वो नहीं है. ओके, सो आई एम फोकसिंग ऑन व्हाट. हाँ अफजल बेटा, मैंने बोला है, एंड सम ऑफ द पीपल सेड कि वी कैन सर इसके बारे में बात करेंगे, बट लोग क्या है कि बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे मैं इमोशनल हूँ वो लोग भी हैं, तो उसमें कोई नहीं. एंड प्लस दिस थिंग दैट आई एम डूइंग इज प्रॉब्लमेटिक फॉर मेनी पीपल. ओके, उनका दूसरा कंडीशन है कि अभी तक जो हुआ हुआ अभी बंद कर दीजिए. दैट आई विल नॉट डू अंटिल एंड अनलेस आई फिनिश द थिंग. आई विल नॉट स्टॉप. ओके, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल क्वालिफाई इफ यू फॉलो द थिंग्स ना. मैंने जो आपको बताया है, इवन यू विल पे मनी एंड यू विल नॉट लर्न दिस. ओके, because most of the people confuse you so that you'll come back, and I don't want you to come back to me again. Okay, I just want you to qualify. Come back to me when you qualify. Okay, ऐसा नहीं कि इस चीज में फंस गए. Okay, so अभी तक लग रहा है कि आप कर सकते हैं. इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ओके, यू नो लॉट, बस इसी को मान के चलिए. नाउ एग्रीकल्चर, यू नो, खाना रोज खाते हैं तो कहीं उग के आ रहा है, कुछ हो रहा है. डिफरेंट चैप्टर्स वी हैव सीन. बायोजियोग्राफी वी हैव सीन हाउ सम ऑफ द सॉइल एंड एवरीथिंग हेल्प्स. So now this course, rest of the chapters are going to be very easy for you, because we'll be focusing on what is required to handle both the things, general studies and optional. Okay, now let us come to some of the concepts which are going to help you specifically in economic geography. Okay, जैसे आप पहला टॉपिक ही देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो रिसोर्सेज की बात की गई है. ओके, सो आई विल talk about some of the economic geographers, but I'm writing the topic so that you can use this thing. You specifically know कि इस टॉपिक में आया तो यूज करेंगे. ओके, हाँ अफजल बेटा, आप कर पाएंगे, सभी लोग कर पाएंगे. ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू दिस थिंग. ओके, जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, and you can discuss even the things with the people you know. Okay, and they'll not be able to tell you these many perspectives. Okay, because all of my old students gave me this feedback. Okay, they are writing mains and the groups in which they are, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए वो जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे. So most of the people ask them कि ये सोचा कैसे. Okay, तो वो आप डिस्कवर कर लेते हैं तो आप करने लगते हैं. You just have to do that. Okay, now what is a resource? Resource word जब हम कहते हैं तो ये है क्या? Resources, general parlance में, what is a resource? Okay, what do you think कि रिसोर्स है क्या? First we'll look at a general definition that you can use in general studies, and then we'll look at something specific. Okay, रिसोर्स वर्ड बचपन से सुना है, ठीक है. इट इज वेरी रिसोर्सफुल. द ग्लास इज रिसोर्सफुल. आई कैन ड्रिंक वाटर. द पेन is a resource, it is helping to write. Okay, this is a resource which has covered my body. Okay, this is a resource which helps me to see the time. Okay, all natural
वर्ड धीरज बेटा आपका यूजेज, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट नेचुरली अवेलेबल। ठीक है, अभी जमीन से स्टील नहीं निकाल सकते। ओके, सब मिक्सिंग इज डन। ओके, तो नेचुरल जब हम कहते हैं तो इट्स प्रिस्टीन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर मेनी फाइबर्स विच डू नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। शुभम बेटा ठीक है। ओके, रिसोर्स क्या है? व्हेन आई सेड कि दिस इज covering my body, this is helping me to see time, this is helping me to hold water so that I can drink, इसका मतलब क्या है? all these are helping me to get what? some desired end. Okay, I want to achieve something. Okay, so anything which helps you to achieve a desired end, आपका कुछ मकसद है वो आपको अचीव करना है। ओके, खुद को बचाना है। अचानक क्या है कि कोई जानवर आ गया, डंडा उठाया, मार दिया उसको, ठीक है, दैट बिकम्स ए रिसोर्स। लेकिन वो डंडा ऐसा ही पड़ा हुआ है, आप रास्ते में जा रहे हैं, ओके, दैट इज नॉट ए रिसोर्स फॉर यू, किसी और के लिए हो सकता है। इट कैन बी ए रिसोर्स फॉर समवन एल्स। ओके, स्टिक विच इज लाइंग ऑन द रोड, ओके, द स्टिक विच इज लाइंग ऑन द रोड, इट कैन बी रिसोर्स फॉर समवन, ओके, the one who uses, but suddenly some dogs appear, they start barking and now you are afraid, you start running, they start to chase you। अभी जान बचानी है तो क्या है? you'll pick that stick, it becomes a resource। okay, so basically nature of the resource क्या है? it is a neutral stuff until and unless something is used to achieve the desired end, it is not a resource। okay, until and unless somebody is able to use it, it is not a resource। so there are hundreds and thousands and crores of things which are existing on the surface of the earth, but not everything is a resource for us। okay, so resource की basic characteristic क्या है? anything that helps to achieve a desired result। okay, you have a desire, you want to achieve something and you get it। ठीक है, और ये डिजायर कैसी हो सकती है? इंडिविजुअल भी हो सकती है, सोसाइटी की हो सकती है, कंट्री की हो सकती है। ओके, ए नेशन, बफर स्टेट हमने कल ही पढ़ा था, इज ए रिसोर्स फॉर बोथ द कंट्रीज, ओके, विच आर इन द नाइबरहुड। बफर स्टेट, इट अलाउज देम टू नॉट go into friction, not go into conflict। okay, so resource क्या है? is not something which is always tangible, it can be intangible as well। जरूरी नहीं है कि आपको वो दिखे ही। ठीक है, so जिमरमैन की जिनकी हम बात करने वाले हैं, प्री जिमरमैन कॉन्सेप्ट was always about the tangible and non-tangible goods। okay, but in today's world, or the focus of the study that we'll be doing will be more about the tangible resources, material resources। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रिसोर्स क्या है? डिजायर्ड एंड्स में हेल्प करता है, प्लस इट इज ए न्यूट्रल स्टफ, प्लस इट कैन बी टेंजिबल और मटेरियल जिसे आप कहते हैं, एंड इट कैन बी नॉन मटेरियल और नॉन टेंजिबल। but we are focusing here, this is the focus। ठीक है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। नॉन टेंजिबल के में गए तो वो फिलॉसफी हो जाएगी, वी डोंट नीड द फिलॉसफी। ओके,
So I hope everybody is clear with the definition part. Okay, so write down. We'll look at the definition given by United Nations 1968. यही है. Okay, but specifically they mentioned that this definition is focused on the tangible, not on the non-tangible. Okay, so write down. United Nations Assembly defined resources. United Nations Assembly defined resources as a means to attain desired ends. As a means to attain the desired ends, both individual and social. Both individual and social. Both individual and social. Full stop. The UN definition focuses only on the tangible or the material elements. The United Nations definition focuses only on the tangible or okay, material. Now, Zimmerman की बात करते हैं. Okay, some of the people who are okay, अभी हमने न्यूट्रल स्टफ वाली बात की थी. Okay, so he said that resources are not they become. Resources are not, they become. It means what? Until and unless somebody is using, it is not a resource. जब तक आप उस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं. Okay, the example like stick का हमने देखा. Okay, it will not become a resource. Okay, and he said that the resources are a functional concept, okay, which remain as a neutral step until and unless they are exploited. जब तक आप उसको खोजने का या यूज करने का नहीं सोचते हैं, तब तक वो रिसोर्स नहीं है. Okay, so write down. He said that resources are a functional concept and are in the form of neutral stuff. And are in the form of neutral stuff. And are in the form of neutral stuff. And are in the form of neutral stuff as long as they remain unexploited. As long as they remain unexploited. Okay. Now, clear है neutral stuff कैसे है? We have taken the example as. So, अब ये यूज करना, डंडा उठाया और मारा. Okay, you are using a stick to hit someone who is trying to harm you. ये कैसे आपको पता चला? Okay, based on the knowledge कि something like this can be done. Okay, तो knowledge क्या है? Is the mother of all resources. So he also said that knowledge is truly the mother of all the resources. Knowledge is truly the mother of all resources. Until and unless you know something. ठीक है, जब तक आप किसी चीज को जानते नहीं है. And both these statements are like what? ये question आया हुआ है.
ओके, एंड इट इज नॉट लाइक कि इसमें सिर्फ जिमरमैन लिखना है, ये भी समझ लीजिए. Zimmerman said this, you know, but you have to give plenty of examples how other people also have shown this thing. Now, knowledge is truly the mother of all resources. Okay. So he said that the resource can expand and contract based on the knowledge. Okay. When you look at some of the scriptures in India, ठीक है. Now there was a scripture about medicine, surgery. इंडिया से ही सर्जरी गायब हो गया, मेडिकल प्रैक्टिशनर गायब हो गए. ठीक है, हम वेस्टर्न स्टाइल ऑफ मेडिकेशन पे ज़्यादा डिपेंड करने लगे. क्यों? बिकॉज द नॉलेज कॉन्ट्रैक्टेड. द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग सुश्रुत संहिता, ओके, इट कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड हाउ यू कैन फिक्स द नोज, यानी सर्जरी कैसे करके नाक को बिठाएंगे. दैट वॉज अ टाइम व्हेन टू इंसल्ट समवन द नोज वॉज कट. Okay, so the knowledge is lost, and when this knowledge is lost, then the resources that were there, they'll also get lost. For example, abhi kya hai, aaj we are seeing everything, everybody will become dependent on artificial intelligence. So people, what they'll do, abhi kya hai, Siri hai, Siri tell me this, Google Baba tell me this. ओके, तो आप क्या करते हैं? एक्चुअली द जनरेशंस विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, ओके, देयर मेंटल फैकल्टी विल लोअर डाउन विद टाइम बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंसी. उनको याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव अ मोबाइल फोन इन हैंड, यू वांट एनीथिंग यू सर्च. ओके, सो यू कैन नॉट रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग्स. द रीजन इज नॉट लाइक कि आपका दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग को काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है. ओके, and the generations who are not dependent on these phones, उनको 100 लोगों के नंबर याद होते थे, घर का नंबर याद होता था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का नंबर पूरा याद होता था, टेलीफोन डिजिट्स, कोड्स, वर्ल्ड के कोड्स याद होते थे जहां जहां रिश्तेदार है. ओके, दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग with the dependence of technology. So some of the resources, human resource जो है वो weak होता जाएगा. And let's say there comes a time because of any event, this AI is lost. Google रहा ही नहीं. Okay, everybody is digitizing the thing. No physical thing. Nobody is trying to remember things. AI भी गया, Google भी गया. What will happen? Again, it will become a traditional society. Okay, and this is evident in what? If we look at our own history, Mohenjo-daro, Harappan civilization, राखी गढ़ी, they were urban centers. उसके बाद इंडिया क्या हो गया? 5000 साल पहले अर्बन थे, फिर क्या हो गया? ट्रेडिशनल सोसाइटी, एग्रीकल्चर, हंटर एंड गैदरर. सो इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस, तो हम फिर से क्या है, अर्बन से उतनी बुरी हालत में पहुंच सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट knowledge is truly the mother of all resources. If knowledge is there, it will expand the resource. ठीक है, अगर नॉलेज है तो यूरेनियम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी दे के लाइट दे रहा है, बम बना दे रहा है, नहीं तो जमीन में गड़ा हुआ है, किसी को मतलब ही नहीं था. ओके, सो एवरीबॉडी इज क्लियर what he meant by knowledge is truly the mother of all resources. Okay, we'll talk about this more. ठीक है, जब हम we'll talk about the topics, we'll see how it is affecting. So write down. Zimmerman considered resources as a dynamic concept. Zimmerman considered resources as a dynamic concept. As a dynamic concept which depends, which expands, not depends, which expands or contracts, which expands or contracts depending on the level of knowledge and technology. So knowledge and, okay, full stop. Since resources are a functional concept, since resources are a functional concept, a more efficient utilization
A more efficient utilization results in expansion in real terms. Results in expansion in real terms. In real terms. Okay. Now, in order to explain this thing, he introduced a concept. Okay. He said that the resources grow. अभी हमने देखा है यही कह रहे हैं, resources expands और grows. Okay, by improving knowledge. Okay, or by technology. Okay, and both of these factors are dependent on what? There are certain resistances. आप नॉलेज लेना चाह रहे हैं या टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं? इज इट इजी? इज इट इजी टू गेट दिस? Okay, so in order to explain this thing, the expansion, okay, the resources may or may not grow. He explained it using two terms जिसको आप आंसर्स में यूज करेंगे. Okay, okay, may or may not grow. If there is resource resistance, it will not grow. Okay, or if there is phantom pile, then the resource grows. Okay, and these are the two terms that if you'll use in your answers, it will help you score little more. ये geographical language है. Phantom pile resource resistance is something that indicates the advantage and disadvantage with respect to resources. Okay, by the concept of phantom pile, okay, let us see one by one what these are. Phantom pile concept of Zimmerman. Okay, he emphasized that if technology can be used, if knowledge can be enhanced, okay, then the functional capacity can increase. The functional capacity of the resources can be increased with knowledge and technology. Functional capacity, it means that initially the glass was used for what? अपना चेहरा देखने के लिए. बट टेक्नोलॉजी से क्या है, इसी ग्लास पे मैं लिख रहा हूं. ओके, द ग्लास वाज ऑलवेज देयर. ये टच स्क्रीन हो जाएगा, किसको पता था, जिसमें आप अपना फोटो देखते हैं. सेम शीशा ही है ये. ओके, सो द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज्ड विद knowledge and technology. So same neutral stuff can give more output with technology. Hence, same neutral stuff can give more output.
with technology. और ये आप अपनी लाइफ में हर जगह देख रहे हैं. Your smartphone is becoming more interactive. Your smartphone is performing much better with a update of a application. वही फोन है, बॉडी तो फोन की वही है, एप्लीकेशन का अपडेट आया, आपने किया, and it becomes more efficient. Okay, it means that the जो चीज हम पहले यूज भी नहीं करते थे उस चीज के लिए, that was neutral. Okay, the glass was and the body iron was not phone, but now neutral stuff become a phone, and it is further can be utilized in better way. ठीक है, सिलिकॉन फोटोवोल्टाइक सेल हो गया. सोलर एनर्जी पहले भी हम लेते थे, खड़े होके शरीर गर्म कर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, लाइट की तरह यूज कर रहे हैं. ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विथ नॉलेज. पहले क्या है, यू यूज टू बर्न द वुड टू गेट फ्यूल. ओके, टुडे ऑल्सो सम ऑफ द बायोमास इज बीइंग बर्न, but that energy is also converted into electricity. Okay, so same process with involvement of technology. क्या हो रहा है, the output can be increased. Okay, he discussed this thing in phantom pile concept. Everybody is clear? So he said that the more we discover, the more we are able to discover. The more we discover, the more we are able to discover. Okay, now when people discovered, okay, that ethanol can be used to make petrol. ठीक है, ethanol blended petroleum के बारे में आप जानते हैं, you have heard of this thing. When people know that ethanol can be used to make petrol, so initially only jatropha was being used to make ethanol to produce petrol. Now कंट्रीज लाइक क्यूबा सुगर कैन को भी इथेनॉल में कन्वर्ट करो. ठीक है, शराब तो बना ही रहे थे. ओके, इथेन मिथेन, इट इज अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उसको पेट्रोल की तरफ करो. इट इज मोर कॉस्टली व्हेन कंपेयर्ड विथ इवन अल्कोहल. ओके, सो द मोर वी डिस्कवर, द मोर वी आर एबल टू डिस्कवर. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स you can associate with how refinement in technology or how the things are used many times. Okay, different things are used in different ways. वैसा कोई statement लिखना है तो you need to mention that Zimmerman said that more we discover, the more we are able to discover, and it is seen in case of this material, that material. Okay, blending of ethanol and everything is a classic example of that thing. Okay, तो अगर आज के डेट में देखते हैं तो blending of ethanol, with petroleum. Okay. So anything new you are showing, you got to make sure that you are giving reference of this thing. Okay, तो ये तो phantom pile हुआ. Now what is resource resistance? Okay, Zimmerman also talked about the resource resistance. Okay, now resistance मतलब क्या है, resource can be having certain problems. Okay, the same resource that अभी आप खुश है, टमाटर ₹1 किलो बिक रहा था, लोग क्या है रोड पे फेंक दे रहे थे. same farmers became करोड़पतिज this time. Okay, 250 रुपीज किलोग्राम. लोगों ने टमाटर खाना छोड़ दिया. ठीक है, टमाटर को देख के हाथ जोड़ के और आगे बढ़ जा रहे हैं. ओके, सो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर. रिसोर्सेज इन इटसेल्फ हैव रेजिस्टेंस. दे हैव इनबिल्ट
resistance. Okay, so because of this resistance, utility is affected. Okay, if resource is less, there is more demand, so not easily available. If resource is more, okay, less demand, okay, becomes almost not usable. Okay, not favored. So if you look at all the resources, energy resources, petroleum की ही बात करते हैं, if we talk about that, what you see, what we experience, if the cost of the petroleum is increasing, okay, गैस का हो जाए तो क्या होगा? प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, रोक दिया जाता है प्रोडक्शन, ओके, और ज्यादा होगा, ओके, सो रेजिस्टेंस इनबिल्ट भी हो सकता है. द अदर थिंग, दिस इज क्या है? ऑप्टिमम क्वांटिटी, पहला पॉइंट. एनी रिसोर्स to become a resource, the quantity has to be optimum. This is first thing is indicated, and the other resistance is you don't know how to use. Okay, this is also how to use it, how to use a resource. This is another thing. Okay, so Zimmerman finally suggested कि how will you know कि optimum quantity क्या है, how will you know कि how to use the resource, if there is superior brain power. Okay, so superior brain power is the greatest resources of the world. Okay, ये Zimmerman ने finally conclude किया, because the humans who will be able to use the resources better, okay, they are the people who will actually grow, okay, prosper. So superior brain power concluded that superior brain power is the greatest resource. Of the world. Okay, the people with superior brain power will be better able to use the phantom pile concept, and they'll try to remove the resistance offered by the resources. So superior brain power is the greatest resource of the world. Okay, एंड अभी क्या है, इसको आप फाइनली कंक्लूड करें अगर, सो मैन हैव वांट्स. ओके, दिस clearly gives a picture of what Zimmerman said. Okay, and man has capability as well. Okay, man has wants, man has capability. Okay, अब wants किसका है? wants भी किसी रिसोर्स का ही है. Okay, man wants resources, और ये कैपेबिलिटी से क्या है? He can remove the resistance. Okay, with his capability he can remove the resistance. Okay, plus with his capability he can use the resource in order to fulfill his own wants. Okay, but this resistance can also damage the resource.
ओके, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, जो आज इंपॉर्टेंट लग रहा है वो कल हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ही ना हो. ओके, एंड दिस स्क्रैम्बल फॉर रेजिस्टेंस एंड रिसोर्स ऑल्सो अफेक्ट्स द इन्वायरमेंट. Okay, so this is something that clearly shows the relationship between man and environment. ठीक है, हमने शुरुआती दौर में क्या देखा, वॉट एवर द ह्यूमन इज डूइंग इन द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव द थिंग्स दैट ही वांट. ओके, so man and environment relationship is clearly visible in what Zimmerman said. Okay, you can use this diagram in many other aspects. किसी आंसर में लिख रहे हैं कैसे क्या रिलेशनशिप है तो आप दे सकते हैं. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर. सो बिहार के केस को आप देखते हैं. ओके, लालू जी वापस आ गए हैं. ठीक है, जापान को बिहार, बिहार को जापान बनाएंगे. तो बिहार इज एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स रेजिस्टेंस. टू मच density of population but failed to utilize the human resource. Japan, less population but was able to utilize the human resource. Okay, so superior brain power is the greatest resource of the world. Okay, ये चीज क्या है, आप कंट्री स्केल्स, स्टेट के स्केल्स पे, those who were able to use the brain power of the people, everybody is born equally. ब्रेन की एफिशिएंसी सबकी बराबर है जब वो पैदा होते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे. ओके, सम एट एन एवरेज एवरीबडी इज सेम. सम ऑफ द पीपल को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट सम कंट्री इज बैकवर्ड एंड सम कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड. द रीजन इज द ब्रेन पावर, हाउ दे हैव यूटिलाइज्ड. ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर. ठीक है, अभी पानी क्या है, अभी डैम जहां पे भी है. ओके, पंजाब में बाढ़ क्यों आ रहा है, डैम की वजह से आ रहा है. ओके, हमें पानी चाहिए. रिसोर्स रेजिस्टेंस. ओके, अभी जो हो रहा है उस पर भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, द रिसोर्स इन इटसेल्फ वाटर इज रिक्वायर्ड एंड इन दिस सीजन ओनली. ओके, इफ you'll go to eastern UP, drought like situation is there. Agricultural areas need water but lot of water in Punjab. ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है, फ्लैश फ्लड्स दे आर एक्सपीरियंसिंग बिकॉज द वाटर फ्रॉम द डैम्स इज लेफ्ट बट द सेम वाटर इज नॉट रीचिंग द अदर पार्ट्स एंड ड्रॉट लाइक सिचुएशन. ग्राउंड वाटर यूज करके आप पैडी उगाएंगे, कितना अच्छा होगा. ओके, until and unless it rains there is going to be a problem. Okay, so if you can think of the things, और ये क्या है, नेचर ही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे. ओके, so resources, everything that is there to fulfill the needs, it is resource. Okay, now if we talk about the discussion of resources only. Okay, तो रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, ये बचपन में आपने पढ़ा है, ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं पता है. ओके, सो ह्यूमन सुपेरियर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन मेक योर मेक और ब्रेक. ओके, ट्रेडिशनल अगर आप इसको लेते हैं. ओके, एंड देन while concluding the answers when it superior brain power वाला लिख रहे हैं. Okay, so you can always write that human is the Brahma, Vishnu and Mahesh of the resources. Okay, human is the Brahma, Vishnu, Mahesh of the resources. Okay, so human brain, what it does, it creates
creator of the resource. If superior brain power is there, you'll use that thing in order to achieve the needs. Okay. Now you are also the preserver or the manager. Okay. So you preserve the resources, and unmindful usage of the resources can lead to destruction. So humans become the destroyer of the resources. Okay, it is we who use it in different ways. Okay, इसकी जगह can be considered. Okay, so this is something that you can use if you want. Okay, because in one of the exams I had used this. This is something that you can also use. Okay, conclusion क्या है, हमेशा वो रटा रटा है वैसा ही लिखेंगे, वैसा उससे अच्छा है. Sometimes you can innovate. Okay. अभी अगर आप जापान को देखते हैं, okay, what they did, mineral resources है ही नहीं, okay, but they have all type of industries. If you look at Japan, okay, Japan is a classical example. No significant mineral deposits. कोई नहीं है, but they developed industries by importing the raw material, and you have plenty of countries who have significant amount of mineral resource. अब mineral क्या है, resource है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे. Okay, so superior brain power can change the thing. Okay, so everybody is clear? Now क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा. द रीज़न इज ये बचपन से आप पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. किसी को नहीं पता हो तो मुझे बताएंगे, तो आई विल एक्सप्लेन. ओके, बट दिस इज समथिंग दैट you'll take effort and you'll make your own notes. अब बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, ये किसी को नहीं आता है. The living, biotic क्या है, living and non-living. Soil as a resource, air as a resource, water as a resource, okay, animal as a resource, bacteria as a resource, fungus as a resource. Abiotic and biotic, ये ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं आ रहा है? Exhaustible and inexhaustible resources. वर्ड मीनिंग गेम है ये, कि ये जिसको नहीं आ रहा है तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक. एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो जाएगा, व्हेन यू यूज इट विल, जैसे रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल. ओके, एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल क्या है, नॉन रेन्यूएबल, रिन्यूएबल. ओके,
इसमें किसी को दिक्कत है? पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, पोटेंशियल क्या है? न्यूट्रल स्टफ, स्टिल अभी यूज नहीं हो रहा है. ओके, फॉर एग्जांपल सेल गैस इज देयर इनसाइड इंडिया. ओके, सेल गैस, बट हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. ओके, गोदावरी कृष्णा डेल्टा, वी नो दैट देयर इज सेल गैस which can be used as can be used in future. Okay, developed is like petrol you are using a source of energy, तो ये developed resource है. Okay, फिर तो डिफरेंट फॉर्म्स, एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर जो क्रॉप उगा रहे हैं, पेस्टोरल यू आर कलेक्टिंग सम ऑफ द थिंग्स. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दे दिए जाते हैं. ओके, एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल रिसोर्सेज. So resources can be of different types. Okay, pastoral, nomadic way of life, घूम रहे हैं, कहीं फिक्स नहीं है. एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर लाइफ. ओके, तो कम से कम ये वाला तो मैनेज कर सकते हैं. ओके, बट टुडे सम ऑफ द जियोग्राफर्स बिलीव दैट ये जो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए. ओके, सो सम ऑफ द जियोग्राफर्स बिलीव दैट एग्जॉस्टिबल टर्म इनएग्जॉस्टिबल यूज नहीं होना चाहिए. ओके, सम ऑफ द जियोग्राफर्स उसके ऊपर छोटा छोटा नोट्स लिख लेंगे. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स, एग्जॉस्टिबल क्या है, इनएग्जॉस्टिबल क्या है, जिसको नहीं पता है दे आर फेलिंग कि अभी नहीं बता पा रहे हैं, मेक ए नोट ऑफ इट. आज ही सीखेंगे गूगल बाबा से पूछ के. ठीक है, इट इज वेरी बेसिक, क्लास 5-6 में पढ़ते हैं, बट फिर भी भूल गए हैं, तो आज गूगल बाबा की हेल्प लेंगे. ओके, सम ऑफ द जियोग्राफर्स एंड इकोनॉमिस्ट्स believe that the term exhaustible resources should not be used anymore. Okay, and prime amongst is M.A. Edelman. Okay, अगर इनकी हम बात करते हैं, so M.A. Edelman is a strong advocate of this thing, this ideology. After Hotling's, Hotling is another person, okay, another geographer, Hotling's analysis. तो इस आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये हॉटलिंग और एडलमैन. ओके, एंड व्हाई एडलमैन सेड दिस थिंग और अदर जियोग्राफर सपोर्टेड दिस आइडिया इज बिकॉज ऑफ द हॉटलिंग्स एनालिसिस. ओके, अब रिसोर्सेज को इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहना ही नहीं चाहिए, कहते हैं. ओके, बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन हॉटलिंग्स एनालिसिस क्या है, हॉटलिंग के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. हॉटलिंग्स एनालिसिस, okay, he said that
the first ever estimates of oil reserves. ठीक है, ये जब से लोगों ने खोजा है तब से ये 50 साल ही चलने वाला था. ओके, इट वाज ओनली 51 बिलियन बैरल्स. ओके, इंडिया में इन सब जगहों का तो छोड़ दीजिए, पूरे जगह का मिला के. ओके, लास्ट 20 years 80 times more petroleum discovered. Okay, so we think that it will get exhausted because we are not able to find. Okay, अभी नेचुरल गैस को देखिए, कोल को देखिए, यूरेनियम को देखिए. ओके, more discoveries every year. Okay, it means that with superior, अब एनर्जी क्या है, हाइड्रो पावर, मोर एंड मोर हाइड्रो पावर, मोर जियो पावर. ओके, सो अल्टीमेटली this analysis which Hotling did for petroleum, okay, this fits in other resources. Okay, Hotling की analysis petroleum से थी. So Hotling said that the petroleum resources, okay, Hotling said that these are expendable. Depletable resources. Okay, though they can finish off. Depletable, it means it can get finished, but ये expandable है. With knowledge, with newer discoveries, it can expand. The resource can expand. Okay, तो हॉटलिंग ने कहा कि कोई भी रिसोर्स है, हॉटलिंग्स एनालिसिस, एवरी डिप्लीटेबल रिसोर्सेज जिसको आप एग्जॉस्टेबल कहते हैं, इट कैन एक्चुअली एक्सपैंड, इट कैन बिकम मोर बिकॉज ऑफ द डिस्कवरीज दैट आर हैपनिंग with technology, with knowledge. Newer areas are being explored, new areas explored. Okay, the depletable resources or exhaustible resources reserve are found. Okay, so they said that we failed to discover earth has everything which is more than sufficient, we cannot deplete it. Okay, this is the idea that some of the people believe in. Okay, so we are not having access. सूडान में और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो लड़ रहे हैं तो हम खोज ही नहीं पा रहे हैं जाके. This is what they believe in. Okay, this is the school of thought that they believe in. ठीक है, और आप भी ये समझ सकते हैं, many of the resources. अब हॉटलिंग का एनालिसिस क्या है, डिस्कवरी पे है, बट विथ टेक्नोलॉजी. अभी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इथेनॉल को पेट्रोल बना पा रहे हैं. ओके, तो विथ टेक्नोलॉजी अगेन क्या है, if there is a question whether we should use, okay, this thing or not, with technology replacements are found. And hence
the resource is not going to exhaust, resources are not getting exhausted in near future. ठीक है, अब पेट्रोलियम विल वेनिस ये नहीं है प्रॉब्लम, पेट्रोलियम इज पॉल्यूटिंग ये है प्रॉब्लम. ओके, पीपल वेयर अल्टरनेटिव एनर्जी क्यों खोज रहे थे? बिकॉज वी फियर्ड कि पेट्रोल विल नॉट बी अवेलेबल. नाउ वी आर सर्चिंग बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग. ओके, एग्जॉस्टेबल खत्म हो जाएगा इसलिए खोज रहे हैं, ऐसा बात भी नहीं होती. ओके, फॉर एग्जाम्पल ethanol blending of petrol. Okay, so alternative find करके क्या कर रहे हैं? The life of the resource is being expanded. Even now the talks are not there. Okay, अगर क्लाइमेट चेंज नहीं होता तो हाइड्रो पावर भी लोग नहीं खोज रहे होते, हाइड्रोजन और बैटरी. Okay, so technology is doing what? It is replacing. Okay, technology gets replaced. The source of energy is actually going to get replaced. Battery driven. अब lithium became an important resource. Okay, today क्या है? Lithium batteries. Okay, so already क्या है, इस exhaustible पे pressure कम हो रहा है, less petrol is required. So with technology, new energy resources, resources being found before the old one can be exhausted. Old resource gets exhausted. Okay, so everybody is clear? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है मुझे ये बताइए. एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, किसी को भी किसी भी चीज पे? एंड रिसोर्सेज आई विल हैव ए लिटिल मोर डिस्कशन. ठीक है, सो दैट ऑन जब हम इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो मोर रिसोर्सेज विल डिस्कस. एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, बट इन द सेकेंड सेशन विल फोकस ऑन सम ऑफ द रिसोर्सेज. एंड द थिंग इज लाइक, अब हाइड्रो पावर ये वो मैं चाहता हूं कि आप खुद पढ़ लें. ओके, अगर किसी बच्चे को बहुत ही एकदम दुख हो जाएगा तो मैं हल्का हल्का बता दूंगा, बट सम ऑफ द थिंग्स ओके यू कैन कवर, बट विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑफ द रिसोर्सेज ओनली, क्योंकि पहला टॉपिक वही है. तो बोथ पेपर्स में रिसोर्सेज से रिलेटेड क्या आ सकता है, दैट आई विल कवर. ओके, एंड विल स्टार्ट अगेन एट 11:30. ओके, सो आई विल हेल्प यू टू वेयर टू फोकस, वेयर यू कैन फाइंड. बट जो क्लास 6-7 में लिखा हुआ है वैसे चीज़ों को मैं थोड़ा सा टच नहीं करने का सोच रहा हूँ, until and unless there is someone who is like कि मैं बिल्कुल ही मुझे नहीं पता कि हाइड्रो पावर क्या होता है. ओके, दो लिटिल डिस्कशन आई विल डू, विंड ये वो मैं थोड़ा थोड़ा करूँगा, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे. ओके, आई विल गिव यू दैट मच, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट 100-150 वर्ड्स, प्लस करंट अफेयर्स ऐड करेंगे, यू कैन राइट essay. ओके, perspectives I will discuss, write-ups will keep minimal until and unless it is important like petroleum. Okay, so again we'll start in 40 minutes. Okay, so we'll stop here for a brief time. Thank you everyone, thank you. Come back at 11:30. Ankit beta, there are 5 chapters in this thing. ठीक है, लास्ट पार्ट है सोच के, ऐसा अभी ये नहीं है, 5 चैप्टर है इसमें. ठीक है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड कंबाइन आई सेड ना. आप देखिए, एग्रीकल्चर इज अ चैप्टर, इंडस्ट्री इज अ चैप्टर. ओके, इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं वो अपने आप में सेकंड पेपर में.
So we'll be covering 5 chapters. हाँ, last section overall ये है. Okay, nothing is left. क्योंकि contemporary issues is like we have discussed many of them. ठीक है, जब न्यूज़ में है जो चीज़ें तो वो बीच बीच में हमने डिस्कस कर ही लिया है. कंटेम्प्रेरी इशूज़ में जो टॉपिक लिखे हैं वो आगे सब दिया हुआ है. हाँ, दिस इज द लास्ट. अंकित बेटा, ओके, these combines are last. So again 11:30 will start. Thank you.